Okay, so we're live now, and hi everyone. We are here today with a Facebook Live on Ask Us Anything, and there are going to be six diabetics, people living with different types of diabetes. And feel free to ask us anything that you'd like to ask us, or share your thoughts in the comments. And this is we're trying this platform for the first time, so in case we miss seeing your comment or we're confused about something, please share your comment again, and we are going to get back and answer you. So maybe we can wait a couple of seconds till a couple of more people join, but then we can also start introducing ourselves. So I can see Sajan's comment. He says hi. Hi Sajan, Nice hi evening. everyone. Okay, so over to you guys. Who's going to introduce themselves first? Nishtha? Okay, sure. Hi, everyone watching. Nupur and Rohan obviously know about this already, but I'm Nishtha. I am type 1.5 diabetic. And in short, my story is kind of like every type 1.5 diabetics, where I was misdiagnosed with type 2 for a long, many years, and I was only on oral medication. After which I realized that my sugar levels were not really responding as well as they should have. I tried to probe further, went to a new endo, and that's how I figured out that I am type 1.5 diabetic, which means I have an autoimmune disease. And yeah, so now I'm on insulin. I have bolus and basal schedule and ritual going on, and I've been on it for about a year and a few months now. And yeah, I mean, that's how life's been so far. Awesome, thank you. Over to you, Rohan. Hi everyone, I'm Rohan and I was also LADA for around 5 years, yeah. And then I think I have shifted to insulin since the last 8 years. And yes, and it's wonderful and just really looking forward to talking to everyone and getting to know uh, wonderful co-panelists, Nisha, Ekta and Nupur. Thanks, Rohan. Ekta, over to you to Hi, introduce I'm yourself. Ekta. I'm Ekta, and I'm a pre-diabetic. I was diagnosed last year, but I managed the diabetes after having this lifestyle modification, and I have managed my pre-diabetes status and improved my immunity with the help of only dietary modifications and some exercise regime. And I'm Wonderful. symptom-free since a year. That's wonderful. Okay. Hi, everyone. I'm Nupur, and I've had type 1 diabetes since the past 27 years. I was diagnosed in childhood, and I'm on MDI. I use um, okay, I was just going to say my all of my insulins and then realized not yet, not necessary. But I think this is going to be an interesting conversation. अगर आपके कुछ सवाल है या comments है, please comment box में डालें और looking forward to chatting with everyone. We have one more panelist who's going to join us. Smita has just come in. So I'm going to hand over to Smita अभी. Smita अपना introduction देंगी और उसके बाद प्रशांत भी join करेंगे. So let's have this cool conversation. Smita, over to you. Okay, not sure if Smita can hear us. Yes, I'm trying to Okay, connect the perfect. headphones. Okay. आज पुणे में रन हुआ था सुबह को एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वाज आस्किंग मी व्हाट इज टाइप 3C डायबिटीज. सो आई थिंक ये जो इंटरेस्टिंग टाइप का डायबिटीज है वो ये स्मिता को है और स्मिता ये हमें दिल्ली बताएंगी. में हमारे डेली मीटर पे भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि टाइप 3C क्या है, सो वेरी लॉट ऑफ पीपल आर क्यूरियस टू नो. करेक्ट. तो स्मिता अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बताएं. व्हाट इज इट?
स्मिता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिटेक्ट हुआ था, तो 8 साल तक पता नहीं था कि ये टाइप 3C है। मतलब अभी ये 2 साल हुए हैं जो मुझे समझ में आया कि ये टाइप 3C है। तब तक मैं जस्ट घूमती रहती थी, टाइप 1 है, टाइप 2 है, 1.5 समथिंग समथिंग चल रहा था। नूपुर की वजह से ही पता चला कि ये टाइप 3C बोल के कुछ होता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेकेंडरी डिसीज फॉलोड बाय द पैंक्रियाटाइटिस। सो उसका जो साइड इफेक्ट है वो ये टाइप 3C। बेसिकली बाकी के कुछ रीजंस नहीं है, जो लाइफस्टाइल डिसीज होता है या समथिंग। मतलब ये जो टाइप 1 में कुछ रीजंस होते हैं जो अननोन रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैंक्रियाटाइटिस हुआ था और उसकी वजह से उसका ये बाय प्रोडक्ट है, अभी लाइफ टाइम कैरी करना पड़ेगा, डायबिटीज। आपको मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन होता है टाइप 3C में या बिल्कुल नहीं होता है? एक्चुअली इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। जैसे हम जनरली कहते हैं कि विटामिन डिफिशियंसी होती है, उसी तरह से ये इंसुलिन डिफिशियंसी होती है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की भी डिफिशियंसी होती है और विटामिन की भी डिफिशियंसी होती है। तो बॉडी में है सब कुछ मगर वो रेगुलेट नहीं होता, उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर इंसुलिन पे जाओ या मेडिसिन लो, ये करना पड़ता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल में रह सकता है, तो स्पेशल मतलब स्टडीज नहीं है। बॉडी इंसुलिन बना रही है, लेकिन वो यूज नहीं कर बॉडी रही इंसुलिन इंसुलिन। बनाती है मगर समहाउ रेजिस्टेंस है या एक्सेप्टेंस कम है। टोटली रेजिस्ट भी नहीं करती बॉडी, मगर यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है इंसुलिन का। और यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से बाद में बाकी के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। गॉट इट। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सभी लोगों का। एंड ऑल्सो एकता, अभी जस्ट हम लोग जब लाइव जाने से पहले हम लोगों को पता लगा कि एकता इज ऑल्सो अ डॉक्टर। सो यू नो दैट्स अनदर सॉर्ट ऑफ फेदर इन अ हैट। एंड ऑफ कोर्स सभी के बहुत सारे फेदर्स हैं हैट में, लेकिन आई थिंक एज वी गो फॉरवर्ड वील कीप टॉकिंग अबाउट इट. So I can see a few comments. I can see Sajan and Anita ji's comments. And hi everyone, welcome, good evening. In case you've just joined, we're talking about well, it's an ask us anything, and we have 5 of us here और 5 लोग अलग टाइप के डायबिटीज के साथ जी रहे हैं. There's a sixth person who's going to join us in a little while. He lives with type 2 diabetes. So what next? I mean, until a couple of more comments and questions come in, should we discuss, our different maybe medication? क्योंकि हर किसी को यहाँ पे रोहन और मुझे टाइप 1 है, और निष्ठा इज टाइप 1.5, स्मिता इज टाइप 3C, एंड एकता has got प्री डायबिटीज. तो ये सारे काफी अलग कंडीशंस हैं. और आप लोग क्या मेडिकेशन यूज करते हैं? आई स्टार्ट विथ मी. आई एम ऑन इंसुलिन, बोलिस जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, और बेसिल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. So that's what I use, and that's it, nothing else. Over to Rohan. So I'm also using bolus and basal insulin. मैं अभी यूज कर रहा हूँ नोवो रैपिड. आई एम यूजिंग पम्प, सो आई नोवो रैपिड एक्चुअली एक्ट्स एज बोथ. तो इन पम्प व्हाट हैपेंस इज दैट जो मेरी बेस बोलस इंसुलिन है वही बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में एज अ बेसल लगती है. सो आई डोंट हैव टू टेक अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. जो नुपुर बोल रही थी, उनको एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेनी पड़ती है और खाने से पहले शॉर्ट एक्टिंग लेनी पड़ती है. और आई एम यूजिंग पंप. सो आई यूज्ड टू यूज सिरिंज और एमडीआईस फॉर आई थिंक 6 or 7 years. उसके बाद आई रिसेंटली शिफ्टेड टू पंप फॉर द लास्ट 2 years. I'll hand it over to Nishtha. Like Nupur, I too am on bolus and basis, but I also have to have oral medication, जो है metformin. So because I think I'm not sure if I understand correctly, but according to what my doctor said, is that it's helping regulate the insulin in my body a little better, because insulin resistance भी है मुझे अभी 1.5 में, which will eventually go away when my diabetes ages and I become type 1 diabetic, like Rohan, because Rohan also started like me.
तो तब तक के लिए I'm on metformin before every big meal as well. So yeah, it's somewhere just like 1.5, somewhere between 1 and 2. My medications are also a mix of 1 and 2 right now. That's pretty much all. Nishtha, has your metformin dose changed over the years? मतलब वो कम हुई या बढ़ी? So yeah, I mean, जब से मैंने इंसुलिन चालू किया तब से obviously it's been less. When I was still suspected as type 2, I was in the highest metformin possible, and after that, my doctor asked me to also supplement it with a mixed start. Right. The 70/30 one, 70/30. obviously it wasn't working because I needed a bolus basal regime going on. But since then, I think मेरे metformin doses काफी कम हुए हैं, brand भी change हो गया है, and the number of times I have to have medication is also less. So once before my first meal and one time after my last meal is pretty much what oral medication I'm on. That's it. Got it. Got it. It'll be interesting to see कि एकता का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मतलब हम लोग तो इंसुलिन पर हैं, बट विद प्री डायबिटीज आप कैसे मैनेज करते हो? You are dealing with insulin deficiency. Your body cannot produce enough insulin. But in diabetes, type 2 and type this 3 diabetes, we have most of the day, we have insulin in our pancreas. Our pancreas is producing excess insulin, but our cells are not ready to take it. This is basically called insulin resistance. The cells are saturated with sugar, and they are now refusing the sugar which we are taking from our food. And if we are not exercising, we are not burning the uh, glucose that we have in our blood. So basically, in pre-diabetes, which is the precursor of diabetes, the insulin resistance is a main factor. So it can be managed in case you are not having some complications. It can be managed on lifestyle modification. If you have no immediate problem like PCOD Yeah. and someone trying to conceive, or if you have type 2 diabetes and your HbA1c is above 11, 12, or our average glucose is above 300, 250, then your body is suffering from damage caused by increased high blood sugar, and it is not fluctuating. The people with the diabetes or pre-diabetes have fluctuations in their blood sugar. If like you eat some carb-based food and your body is basically not taking it, so your blood sugar will be raised. So the basic funda, जो main उसमें जो सॉल्यूशन है उसका कि आप अपनी बॉडी को ओवरलोड जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दो. You take if you are taking grains in too much amount, in ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, and you are not exercising, तो ये चीजें आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएंगी और घटाएंगी. तो बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वी आर इंडियन एंड आई थिंक मैक्सिमम half of our population is vegetarian, pure vegetarian like us. I started eating eggs because I was eating eggs previously, but I stopped there. बेसिकली वेजिटेरियन डाइट में ऑप्शन क्या है आपके पास प्रोटीन का? तो यू आर लेफ्ट विद राइस, यू आर लेफ्ट विद व्हीट, यू आर लेफ्ट विद व्हीट प्रोडक्ट्स और सम काइंड ऑफ ग्रेन, एंड दैट इज digesting so fast and can rise your blood pressure. So basically low carb food, आप ये बोलेंगे कि चलो अनाज बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या? तो मैंने फर्स्ट जो अनाज था, मतलब आई टेस्टेड माई ब्लड शुगर, मतलब मैंने फर्स्ट 6 मंथ जब मुझे पता चला, मैंने हर खाने के बाद लाइक टाइप 2 पीपल डू और यू पीपल डू, मैंने टेस्ट किया और मैंने चेक किया कि स्पाइक किससे जा रहा है. लाइक मैंने रोटी खाई और मेरा माई ब्लड शुगर इज गोइंग अप टू 180. Then after 2 hours, it is coming down to 120 or 130. I am happy. If I am checking after 2 hours, my sugar is normal. But वो लेने के बाद मेरा शुगर 1 घंटे में, जो कहते हैं ना डाइजेस्ट होने के बाद जो पीक जो आता है, दैट इज 180. It will cause my pancreas to release more insulin, and it will bring the blood sugar down. So that is called spike, और इस spike को अपने को खुद को रेगुलेट करना है.
तो रेगुलेट करने के लिए आप लो कार्ब लाइक दालें, लेंटिल्स आर बेसिकली, दालें जो हैं दे आर लो ग्लाइसेमिक फूड। आप दाल इंक्लूड कर लो, आप दाल की रोटी खाओ, आप बेसन का चीला खाओ, दैट will cause less spike. It will have carbohydrates, but it will cause less spike. Additionally, I tried some naturopathy or natural medicines like apple cider vinegar or simple vinegar. Acetic acid will do it slowly. When you take it with food or just before food, it slowly digest your खाना आपका धीरे धीरे पचेगा, तो आपको स्पाइक्स नहीं आएंगी एंड योर बॉडी विल नॉट have a spike of insulin, which is causing insulin resistance. Also, Right. if it is possible, if you don't have time for to exercise or walk for 1 hour or 30-45 minutes, like I am working around about 8 to 10 hours a day. I have two kids, one 4 years old and one 10 years old. So we are very much busy. So I just take walk after meal because I have breakfast and I take a 15-minute walk after meal. It will cause some this बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, और ये शुगर जो है वो 15-20 पॉइंट और नीचे कर देगा फॉर मी। जिनके साथ और ज्यादा वाली प्रॉब्लम है वो और कर सकते हैं। तो बेसिकली Right. आपने लोड कम किया, आपने स्पाइक कम की, और आपने उसको डाइजेस्ट करने से मतलब कहते हैं ना स्लो कर दिया, आपने डाइजेशन स्लो कर दिया उसका फूड का, तो इट विल कॉज लेस इंसुलिन स्पाइक एंड आपने जो भी आपके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है उसको बर्न कर दिया। वॉकिंग इज वेरी इफेक्टिव। Also, if you have less muscle mass and you are thin, so some weight training will help. So twice or thrice a week, not more than that for me. I do some Yeah. house workout, but I walk and I try to cover my 6 to 8,000 steps per day. That's wonderful. That's really nice, and This it's very very nice to also see a doctor who is not just talking about low carb but also doing it themselves. So that's really really nice, and I have been following your journey on our Facebook community on Diabetes Support Network India, and I have seen how things were earlier and how you've kind of arrested the journey towards type 2 and stopped it from going there. So that's I think that's incredible. So for everyone who's just joined, we are doing an ask us anything. हम 6 लोग हैं, अभी आपको स्क्रीन पे 4 दिखाई दे रहे हैं बिकॉज 2 others आर ज्वाइनिंग, लेकिन 6 लोग हैं, 6 पैनलिस्ट लिविंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। और हम लोग आज बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम सजन एंड ही सेज कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से टाइप का डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? Because often when we talk to people that are non-diabetic, like this morning we were chatting with some runners and they were not diabetic and they didn't know कि टाइप 1 जैसा भी कुछ होता है। तो ये कैसे पता किया जाए कि कौन सा टाइप का डायबिटीज है हमें? So how did you guys? I know this was a challenge for Nishtha. I remember you Yeah. saying so. Yeah. So initially, obviously, I happened to be very fortunate enough to know कि मुझे like diabetes symptoms के बारे में पता था. So initially, I did only a home test, and I realized the numbers are very high. After which, I was asked to do like a battery of tests because of my age. I was in my early 20s when I was diagnosed. तो इंक्लूडिंग HbA1c टेस्ट एंड vitamins वगैरह किए, लेकिन साथ साथ में later on also I had to do, and previously also I had to do, especially because of my age, was the GAD antibody test and the C peptide test. So GAD antibody test से mainly you can figure out if it's an autoimmune disease like a type 1.5. I think type 1 के लिए भी GAD antibody test है, right? Correct. It tells you that it's not, I mean, that is the biggest way you can find a distinction between type 1, 1.5 and type 2. And I had GAD antibodies present in my body, which is then we realize it's obviously, it's an insulin, like it's a problem of making insulin that my body has. And C peptide test karvaya tha to check how much the reservoir is left, basically how much
insulin is left in my body and how much it's depreciating over a period of time. So at least for 1 versus 1.2 and 1.5 versus 2 ke liye to GAD antibody tests and C-peptide tests are a must. Any doctor will tell you to get that done. Nupur, over to you. Thank you. That's so helpful because a lot of people have this question कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन से टाइप का डायबिटीज है एंड अबाउट टाइप 3C जब हमारी टाइप 3C की रिप्रेजेंटेटिव वापस आ जाएंगी स्क्रीन पे वी विल आस्क हर बट इन द मीनवाइल आई एम गोइंग टू पास ऑन टू Prashant. So Prashant, who you see on the screen, lives with type 2 diabetes and he is also on insulin, but I'll let him talk about his give us a quick introduction about himself. We can't hear Prashant, you. we can't hear you. हाँ, I can see he's muting and unmuting लेकिन आवाज नहीं आ रही है. Maybe turn up your volume. I don't know if that will help. Go to Maybe settings. Prashant will Okay. use हाँ, so headphones. You might need to give also, permissions also. oh, check that out. Uh, No, I mean, Can go Prashant will to have to give permission to the browser. right. settings. Settings में Settings. audio को option है. So while Prashant figures out his audio situation, there's another question from Sudarshan, and he says, "Can neural damage which happens during diabetes be reversed? And is there a way where it can be checked how much damage has happened?" So I think we will maybe Ekta wants to take this question. Yes, the neural damage. This is called peripheral neuropathy. That is that happens when your sugar is consistently above 250 for few years, for few months or few years. It cannot be reversed if it is due to diabetes, uncontrolled diabetes. Some part of diabetic like neuropathy can be reversed if it is due to vitamin B12 deficiency. Your body needs some micronutrients like zinc, selenium, like pancreas, basically pancreas needs, and vitamin B12 deficiency, which is due to low absorption, and many people are deficient vitamin D and vitamin B12 deficiency. If it is due to diabetes B12 deficiency, it can be reversed, but if you have a well-established neuropathy, then it cannot be reversed. You have to live with some uh, neuropathy, and you have to get tested repeatedly to see any progress. And you Correct. have to take the supplements like vitamin B12, vitamin D, zinc, selenium. These supplements, because basically most of us, like I said, most of us are not eating very nutritious or very fulfilling diet, and we need more than a regular people need. Correct. Because there is We some less absorption, so we need some supplements. And if your doctor prescribes you, you better take it. Correct. That makes sense. Yeah. No, that's great advice. And I think for those who maybe just joined only just now, a few minutes ago, Ekta was mentioning that most Indians, I mean, our Indian food is really carb heavy, right? And low carb जब बोलते हैं और जब कोई vegetarian होता है, it becomes really challenging. So if you guys are on a Facebook group which is Diabetes Support Network India, please go and check out the posts that everyone puts up. Look at Ekta's post as well. Very recently, some very yummy broccoli stems की भाजी बनी थी एकता के घर में. So that's a really interesting recipe, and there are lots more as well. I see another question from Ankita, and she has two questions. पहला question है how to prevent leakage from the insulin pen. एंड सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू मैनेज डाइट. हमारे घर में रोज सब्जी रोटी बनती है एंड आई एम टाइप 1. सो पेन वाला आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू निष्ठा एंड रोहन बिकॉज आई डोंट यूज अ पेन. सो ओवर टू यू. Uh, Frankly, I've never had like this experience of insulin leaking out. But what I also do is जो मैं जो
नीडल के साथ जो छोटा लिड आता है, I keep that on all the time. So I think maybe that's one reason why I've never had to face this issue. And also, obviously, standard operating procedures where you, after you're done using the pen, keep the lid back on properly and put it back in the refrigerator. Make sure that बहुत ज़्यादा temperature fluctuation as much as you can avoid नहीं हो. So I think that's one way of sorting it out. As far as the diet question goes, I think at least since I've been on insulin for like a year, it's been a constant struggle to find the right diet for me. And it's okay, like it's okay, you can struggle. And ऐसा भी होता है that sometimes, depending on your health and depending on whether you're menstruating, you have to change your diet a little bit to make sure that you're getting the right kind of nutrition. But yes, I think I had the same problems. मेरे घर में दाल रोटी वगैरह बन रही थी. You can do, I mean, you can start making these small substitutions. Like I switched wheat roti with nachni ka roti. Nachni ka atta I used to get home and like get them to Ragi, make it ragi, nachni, ragi. jawar. Now I've been trying out jawar ki roti as well. So whatever works for you that way, as far as the substitutions goes, that's great. Make sure you add a lot of like salads and greens in your diet. Anytime you're eating any meal, please eat a lot of like leafy vegetables and raw veggies. That also helps. तो ऐसा नहीं है कि दाल रोटी या दाल सब्जी खाते खाते you can't actually have a low carb diet also going on. It's just like you start making these smaller substitutions and start small. Like Rome wasn't built in a day, and you're never going to change your diet in a day. So overnight करने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा करके change करोगे तो you will get to a point where you will understand what your body needs best and what your body is accepting and what it's rejecting. Since you're already type 1 and you're checking your sugar, you will know exactly किस चीज का असर कैसा हो रहा है body पे. So you have that advantage going for you. Basic, Nice. I want to add some. हाँ, I, बोलिए. we also eat. We also have roti and dal in meal. Basic. I substituted wheat with oats, rolled oats. They are slowly digesting, and I just eat them in breakfast. Oats chila, and pair it with protein. I am fond of Yeah. soya chunks, soya granules. I pair it with soya granules, and I see there is no spike or no huge spike. I work in my OPD from about 10 o'clock to 4 o'clock, and there is no huge spike or no spike after having this breakfast. But also calculate. You have to calculate your carbohydrate intake. It must be around 30 to 40 grams. If you are vegetarian, it must be around 30 to 40 grams, not more than that. Low GI source. And if you are eating dal, dhokla, or steamed that bhajia, जो बोलते हैं, we can digest if type अगर cholesterol issue नहीं है, तो little amount oil and fat is not harming our body. तो दाल के पकौड़े, दाल के चीले, दाल का ढोकला, and pair it with protein. Soya chunks are very easy. और I'm living in a small town. मुझे मिलता है आराम से. न्यूट्रेला आप ले लो और कहीं चक्की में ही दे आओ. आप सोया ग्रेन्यूल्स आपने लिए या सोया चंक्स, उसको पीस कर आप अपने आटे में मिला लो. It will increase the protein content and it will create less spike. This is in the breakfast. And at night, तो Yeah, sorry. अंकिता, आपने ये पूछा था कि इंसुलिन पेन में आप थोड़ा बता दो कि लीकेज कहाँ से हो रहा है, तो हम थोड़ा बता पाएंगे कि नीडल से हो रहा है, एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है, क्योंकि यूजुअली वो तो होना नहीं चाहिए वो. और Also, if you're using a steel pen, it could be possible that वो defective हो गया होगा by now if you're feeling like leakage हो सकता है. हो रहा है तो करेक्ट, it's quite possible. करेक्ट. और लाइक डॉक्टर एकता एंड निष्ठा मेंशन कि आप चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं. थोड़ा कार्ब, रोटी और चावल मेरे घर पे भी बनता था, तो रोटी की जगह आप एडोर रोटी यूज कर रहे हैं मेरे घर पे. उसमें थोड़ा सा आटा मिलाते हैं, एडोर लो कार्ब आटा, और आई थिंक ऑलमोस्ट 30% आपका वो नॉर्मल आटा,
तो वैसे रोटी बनती है। और चावल के लिए आप कॉलीफ्लावर राइस बना सकते हैं, जो बिल्कुल चावल की या तरह टेस्ट कर सकता है। आप कॉलीफ्लावर को ग्रेट कर लो, उसको बॉईल कर लो, और उसके साथ आपको दाल लेनी है या फिर आपको पालक लेनी है, पालक पनीर ले सकते हो। सो चीज़ों को रिप्लेस करो, बिकॉज अगर ऐसे बिल्कुल आप लो कार्ब पे जाओगे और सैलेड, मतलब अगर आपको एक चीज की आदत है तो उसी को रिप्लेस करो। जैसे मेरे को अगर रोटी कम करनी थी शुरू में, तो मैं एक रोटी की जगह 2 एग वाइट का ऑमलेट खाता था सब्जी के साथ। सो मैं सब्जी लेता था और एक रोटी और एक 2 एग वाइट का ऑमलेट, फिर दो 2 एग वाइट का ऑमलेट। तो ऐसे करके आप रिप्लेस करोगे तो आपको आसान होगा उसमें शिफ्ट करना। और करेक्ट। भी एंड सवाल आ रहे हैं हमारे पास नुपुर। यस, मेरे को एक पॉइंट ऐड करना है। कई लोग पूछते हैं कि लो कार्ब अगर करना है तो फिर मुझे ड्रास्टिकली अपना कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या? जैसे अंकिता का भी क्वेश्चन यही था कि घर में रोटी सब्जी बनती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ एकदम फैंसी बनाना है या आपको कल से बस कॉन्टिनेंटल खाना खाना है। आप अपना नॉर्मल इंडियन खाना जो घर पे रेगुलरली बनता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे अभी बाकी तीनों पैनलिस्ट ने सजेशंस दिए कि आप फिर सिर्फ स्वैप कर लो आइटम्स की, चावल की जगह कॉलीफ्लावर राइस। तो दीज आर कपल ऑफ ऑप्शंस। जरूरी नहीं है कि लो कार्ब का मतलब एक्सपेंसिव हो। अगर आप कौन सी इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे कि आमंड फ्लावर या अगर आप कोई चॉकलेट्स खरीदे ऑनलाइन, तो ये चीज हमें रोज नहीं खरीदनी है। एक आध बार अगर आपको यू वांट टू बाय इट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट you can make do with vegetables, with meat, with dal, depending on whether you're vegetarian or non-vegetarian. So there's a lot that you can play around with. Even अगर आपको रोटी बनानी है, there are so many options, group में भी और अभी भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड ग्रुप इज वेरी हेल्पफुल। तो आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह का रोटी खाऊं, किस तरह का, जो भी आपको है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, सबके आपको जवाब मिलेंगे। और आई थिंक अंकिता ने बोला है नीडल से इंसुलिन लीक हो रही है। तो अंकिता, नीडल से लीक नहीं होनी चाहिए इंसुलिन। नीडल पे स्मॉल इंसुलिन का पॉइंट बन जाता है, मतलब, और उससे ज्यादा इंसुलिन लीक नहीं करती है। तो यार पेन या नीडल में कुछ फॉल्ट है, आप उसको एक बार देखो, चेंज रिप्लेस करके देखो। और और हमको थोड़ा यूनिट निकालना पड़ता है लगाने से पहले। जैसे अगर मैं इंसुलिन का शॉट ले रहा हूँ तो आई हैव टू, मैं 1 या 2 यूनिट हवा में निकालता हूँ, उसके बाद शॉट लेता हूँ मैं। मैं उसका टर्म भूल गया, मैं बहुत दिनों से पहले नहीं प्राइमिंग यूज है करा। तो हाँ, प्राइमिंग, राइट। तो वैसा प्राइमिंग होता है। उसके अलावा अगर वो लीक कर रही है तो आप एक बार रिप्लेस करके देखो अपनी नीड। हेलो। स्मिता। हेलो। हेलो। हाँ हाय। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है, ऑडियो सुशील वीडियो दोनों का एकदम क्लियर है। हाँ सुशील का ठीक है, सवाल फोन से है लॉग इन कि, किया अभी। ओके। अच्छा स्मिता, आप एक बार और सबको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आप काफी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, तो आप थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में और डायबिटीज के बारे में। 3C। ठीक है। स्मिता कुलकर्णी। और तो टाइप 3C है, काफी अलग सा है जो बहुत लोगों को पता नहीं है मेरा। ये जो होता है ये पैनक्रियाटाइटिस की वजह से होता है। जब आपको एक्यूट या क्रोनिक टाइप का पैनक्रियाटाइटिस होता है तो उसके बाद में ये सेकेंडरी डिसीज की तरह से आता है आपके लिए, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और ज़्यादातर डाइजेशन पे वगैरह ध्यान देना पड़ता है। उसके हिसाब से आप नॉर्मल लाइफ मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये टाइप 3C है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में ये बाकी की चीजें हो जाएंगी, वरना स्मिता, टाइप 1 या टाइप 2 से मिसअंडरस्टूड हो जाता है ये। स्मिता, आपको पता कैसे लगा कि आपको टाइप 3C है? नूपुर की वजह से। तो आप तब हाँ तक क्या मैं बातचीत कंफ्यूज हुई थी। आपको? क्या? आपने कोई टेस्ट कराया या फिर आपने कैसे आपको पता लगा कि जी, ये टाइप? जी नहीं, मुझे 2012 में डायबिटीज हुआ, नवंबर 2012। एक्चुअली तब वो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का अटैक हुआ था। तो उसके बाद में जब डॉक्टर ने घर पे छोड़ दिया तो कहा कि अभी ये डायबिटीज गिफ्ट में है आपके लिए, लाइफ टाइम रहेगा। तब से बहुत दिनों तक टाइप 2 कंसिडर कर रही थी मैं। बाद में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो डॉक्टर ने कहा शायद तुम्हें टाइप 1 है, कोई कह रहा था 1.5 है, ऐसे चल रहा था।
प्रेगनेंसी डिलीवरी ये फेजेस सब खत्म हो गए। और अभी जब पिछले साल डॉक्टर चेंज किया मैंने, तब उन्होंने कहा कि रूट कॉज जो है डायबिटीज का वो पैंक्रेटाइटिस है आपका, तो उसके हिसाब से आपका टाइप भी अलग हो जाएगा। तब बाद में मैंने सर्च करना शुरू किया, तो जस्ट इतना समझ में आया था कि ये जो है वो 1 या 2 नहीं है, मगर क्या है ये पता नहीं था। तो लगभग एक 7-8 महीने पहले नुपुर ने बताया मुझे कि ये समथिंग डिफरेंट टाइप है, टाइप 3C। तो तब से समझ में आने लगा कि हाँ, जो सिम्टम्स है तो ये तो सभी यही है, या ट्रीटमेंट जो चल रहा है मेरा वो इसी हिसाब से है। आई ऐसा थैंक्स है, थिंक थैंक्स स्मिता। थ्री मतलब सी बहुत सारे डॉक्टर्स को भी पता नहीं है। Basically, इस पे 3C is रिसर्च भी a बहुत कम recent है, और जो 3C is a recent update. Just these endocrinologists are updated. The basic physician, primary physician, healthcare physician, they know that there is हम्म secondary diabetes mellitus due to pancreatitis, but it is named 3C. This is new term. हम्म That's why या they are like या they don't know. हाँ हाँ, In fact, I did some बराबर है। research after seeing your बट that diagnosis. हाँ, जस्ट So दो I found रिसर्च it पेपर्स because अवेलेबल है नेट पे। they know they think it is in books, but people don't say it हम्म is 3C. It is secondary pancreatitis, and in most cases, हम्म is in acute pancreatitis. It is transient, but it can progress to type 2 or type 1. ग्रेट। हम्म Because pancreas, बहुत सवाल। the pancreas, exocrine and endocrine pancreas both are destroyed after pancreatitis, and you get या many hormonal or many enzyme deficiencies. We have digestion problem and also insulin deficiency. एकता, यस, एक सवाल है आपके लिए कि बराबर है, बेसिकली वही है। Hmm. रागी से शुगर हाई होती है क्या? हाई होती है या क्या? नहीं होती है ये रागी से हाँ जी। रागी is a millet and it has around 10 to 9 to 11% this protein and rest is carb and fiber is also included counted in net carbs. Some people can spike with ragi. मैंने रागी की रोटी ट्राई करी एंड इट वाज गिविंग मी सम स्पाइक अराउंड 170 160. My peak sugar was there and my pp sugar was 145, so I stopped taking that. But sometime I try and pair it with protein like soya chunks. It is lifesaver for me. So when I pair it with soya chunks, it will not spike my sugar. So I make ragi pulao and I add soya chunks. It will not cause spike. बेसिकली पेयरिंग प्रोटीन अगर आप पेयर कर रहे हैं प्रोटीन के साथ तो वो स्पाइक नहीं करेगा. तो और निष्ठा का एक दैट a thing is called carb coating. First you eat your vegetables like fiber. After that you eat your protein and at last you eat your carbohydrate. It is called carb coating. तो वो लास्ट में अगर आपके पेट में जाएगा तो वो स्पाइक नहीं देगा. तो खाना भी खाते हैं तो पहले सब्जी खाओ फिर That's a good अपना thing. एग या वो खाओ और लास्ट में थोड़ा सा ग्रेन अगर आप खाते हैं तो आप खाओ तो दैट विल कॉज बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल. और Nishtha हमारे was also पास saying she eats ragi, nachni or ragi. I'm confused Yeah, now. yeah. How is it I different? tried having nachni initially when my dad was diagnosed with type 2 diabetes, and वो होता है ना, मतलब एक इंसान को हो जाता है तो the head of the family tries to change the diet of the entire family, which was a good thing actually. And initially, I had a lot of nachni rotis, and in fact, we used to make nachni dosas with like onion and everything also. Till it actually started giving me stomach issues. I think nachni is extremely tasty. I love it. Out of all the millet flours, I love nachni the best. Unfortunately, it's not suiting me anymore. And in fact, so I have stopped and I am trying to figure out if jawar works for me better. But also, I think when Ekta ji was talking about oats, I realized one thing that a lot of people say that diabetes hai to oats khana chahiye and stuff like that. Earlier on, when I was on only oral medication, oats used to work really well for me. And then I realized that I, in fact, wanted to ask you guys about it. When I shifted to an insulin regime, oats used to give me these insane spikes in the mornings.
and then Same I here. had to unfortunately discontinue with it. So yeah, I wanted to ask you guys if you've also seen like spikes with oats, because एक होता है वो normal oats जो oatkas and all of that का मिल जाता है, एक होते हैं सिर्फ steel cut oats that they say that diabetics should only have steel cut oats because they are better processed by your body. So like, what are your thoughts on oats with insulin? Steel For cut or rolled oats along with yeah, soya bean protein. yeah. It works only. I don't touch oats because it's very spiky. Right. And Spicy. another type one Spicy. friend also recently had oat milk with her coffee, and she also noticed a lot of spikes. So and she's also low carb. So that's Yeah, wow. yeah. It's so सनी when का it comes to सवाल है food, I कि think. Sorry, Rohan, I was just like, when it comes to food, I think a lot of people just ask कि diabetics ये खा सकते हैं क्या? The only I think the only answer is आप खुद खा के check करके देखो आपको suit हो रहा है या नहीं हो रहा, because every body I think is responding so differently with like similar things also. Correct. I see सनी Sushil का has क्वेश्चन asked. है. Sorry. हाँ, go ahead, Nupur. Sushil has put in his comment for a second time. Why cure if type 1? Why is a type 1 cure away from us, and why is a cure not coming yet? This is a question that my parents, my family has been looking for an answer for the past 27 years. And so has every other family who has somebody living with type 1 diabetes. The answer is we don't know. As normal people, as regular people, we are not scientists. We don't know what's happening, but there are some very interesting, researches going on. So there are a couple of things that are happening, but um, I think I stopped tracking this a long time ago. I don't look at it anymore. अगर आएगा बहुत ही बढ़िया है, great. Hopefully, all can access it and everyone will benefit. But until it comes in, I think we have to take care of ourselves. दूर इस चीज के लिए भी है क्योंकि रिसर्च में उतना पैसा इसलिए इन्वेस्ट होगा जब आपको बहुत ज्यादा लोग, जैसे कोविड का बहुत जल्दी वैक्सीन आ गया, बहुत जल्दी निकला क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट हो रहा था, राइट. टाइप 1 बहुत ही कम पॉपुलेशन को अभी भी इफेक्ट होता है, और मेरे ख्याल से मतलब रिसर्च में अगर बहुत ज्यादा लोगों का पैसा जाएगा और बहुत मोटिवेशन रहेगा साइंटिफिक कम्युनिटी का, तो हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो वक्त लगेगा इसको आने में. No, it is. There's another question like, is low carb diet good for children? क्या बच्चों को हम दे सकते हैं low carb diet? I think Anyone can take it. like Nishtha said, for anything to do with diabetes, try it for yourself and see how you feel about it. Abhi panel mein filhal, I think none of us are, a caregiver to a young child living with type 1 diabetes. But we've seen parents that have, used low carb for their young children, and they've done excellently well with the blood sugars also and the growth as well, because protein is the building block for the body, and that's something that is really important. So this is a very debatable topic, but I think I vote for low carb for very जैसा good blood sugar control. जैसा डॉक्टर एकता ने भी शुरू में बोला था कि हमारा डाइट बहुत कार्ब हेवी है, इट्स वेरी कार्ब हेवी, सो इट्स बेटर टू मूव टू अ बैलेंस डाइट फर्स्ट एंड उसके बाद यू कैन Yeah. थिंक ऑफ रिड्यूसिंग योर कार्ब्स. पर आप पहले देखो कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो कि नहीं, जो कि अराउंड मेरे ख्याल से 40% कार्ब्स, 40% प्रोटीन एंड 20% फैट होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ एनीवन वांट्स टू ऐड, कि आपका बैलेंस डाइट. चिल्ड्रन में आप प्रोटीन पर दे दो सफिशिएंट, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो वो बर्न कर देंगे. वो दे आर वेरी एक्टिव, देयर मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई, तो वो बर्न कर लेंगे. उनको बहुत लो कार्ब में नहीं रखना. दे कैन टेक राइस, बट इफ दे आर पेयरिंग इट विद प्रोटीन, लाइक दे नीड अराउंड 2 grams per kilogram body weight protein. So if they take it with protein, there is no need to do low carb because their activity level is very high. We try to save our energy, and that is the main problem for us. We work out Yeah. in the morning, then we are मैंने भी sleeping all day, so problem उसमें होती है. Yes. और We are सवाल है active all हमारे the time. पास. मैंने भी अभी मतलब 10 साल में जो चीज, हाँ,
नोटिस की है वो ये है कि अगर मेटाबॉलिक रेट अच्छा रखा अपना तो ये बाकी के इश्यूज बहुत सारे कम हो जाते हैं। कार्ब्स थोड़े कम लो या ज्यादा लो, या मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो कार्ब्स खाने की जो मतलब जो रॉ खाते हैं हम वो भी ज्यादातर मतलब आपके नहीं होता। नॉर्मल सब्जी सलाद ये सब चीजों से आपका पेट अच्छे से भर जाता है, क्रेविंग्स नहीं होती ज्यादा। ये मतलब मेरा Then पर्सनल ये है एक्सपीरियंस कि अगर डाइजेशन अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो। got it. Rajiv ji has a question. Rajiv ji has been living with diabetes for more than 60 years now, and he's asking how to deal with skin rash during rainy season for type 1s. रेनी अगर आप कभी भी स्किन रैश होता है तो आप कैसे डील स्किन प्रॉब्लम से कैसे डील करें टाइप 1? I mean, Nupur, you want generic. to take it? Yeah. Yeah, I just not anything specific, just sharing generic information, and I'm sure. Uh, I mean, one thing is keeping the blood sugars under control always. I mean, the first answer to everything is tight glycemic control. वो एक है. और फिर of course dermatologist को consult करके सलाह ले सकते हैं कि why is it. Another thing is to keep your sort of skin, your especially your feet. Maybe when you're going out and your feet get wet all the time. If you live in a place like Mumbai, which has a lot of rainfall, अगर आपके socks और shoes गीले हैं, you can dry your feet. So these are a few things. Feel All free to right. add more. Treat the cause. What is the cause of rash? First, we have to rule out is it due to allergy or any infection, and then treatment is according. Got it. Right. Most Uh, important thing is stay away from mosquito bites. That starts so many problems. Yeah. should we always do, Simi Kaur has a question, should we always do priming for insulin pen or only when the pen is used for the first time? This is a great question. I think I'll hand it over to Smita, Nishtha, Nupur. Actually, no need to do that every time. If you are seeing something bubble or gap, so then it is necessary. Otherwise, no need. Nishtha, do you prime every time? No, I did prime all the time बीच में because एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो गया था that I didn't get the insulin, and afterwards I realized after I saw a spike, so I started priming बीच में. I think when you use insulin so often now, you start to come to know कि if it is behaving properly or not. Like I think you can look at the needle and figure out that whether the it's moist enough and like आ रहा है या नहीं आ रहा है. So yeah, I don't prime it all the time, but yes, when I feel a little suspicious, एक या दो यूनिट यूज करके देख लो. Most of the times that should do it, and that should sort you out for the entire day actually. So even if you don't want to like prime it like every single time, I think एक बार morning में करके just like your suspicious mind को थोड़ा शांत करके, I think then it works fine. Yeah, and I think जनरली अभी पेन कैप जब ओपन करते हैं हम, अगर कुछ डिस्टॉर्शन है या गैप है तो वो उस पे एक ड्रॉप नहीं दिखेगा नीडल पे, और अगर नीडल Exactly. पे एक ड्रॉप दिख जाता है तो वो अच्छे से काम कर रहा है। अगर ड्रॉप नहीं दिखता तो फिर एक दो यूनिट्स टाइम करके देख सकते हैं। Yeah, this problem मैं happens only when you're using cartridge wala pens. Otherwise, the if I'm using Lantus that comes pre-filled, मैं एक बार prime करती हूँ and then I do not prime it again. डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड टू प्राइम एवरी टाइम, और Yeah. मेरे को प्राइम करना होता था तो मैं एक यूनिट ही करता था, क्योंकि मैं और इंसुलिन नहीं वेस्ट कर सकता। तो अगर मैं दिन में 3 या 4 बार इंसुलिन लगा रहा हूँ तो मैं 3-4 यूनिट प्राइम करता था, और 3-4 यूनिट दिन के आप कर सकते हो प्राइम, मतलब उसमें कुछ इशू नहीं है। टू बी ऑन अ सेफर साइड आई वुड सजेस्ट कि आपको प्राइम करना है तो आप 1 यूनिट कर दो प्राइम। मैं ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम करता था प्राइम। Cool. Reading out the next question by Pushparaj, and he says, "Hi, I'm T1D and my height is 173 centimeters and weight is 47 kgs. My HDL and triglycerides are normal, and LDL and VLDL are less than the lower reference range.
I want to increase my weight to 70 kgs. What food should I eat? How much? And I'm non-vegetarian. So maybe Rohan, you want to take this? So if you're non-vegetarian, I think you can eat the maximum amount of protein that you can, right? Which is, I think, around 2 gram per kg, right? So आप उतना तो अपना, how much is his weight currently? 47. 47. तो आप 100 ग्राम तो आप प्रोटीन ले सकते हो दिन में, और उसके अलावा आई थिंक आप कार्ब ले सकते हो और आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, एंड स्लोली, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू हैव टू कीप योर शुगर्स इन कंट्रोल, क्योंकि आप कितना भी वेट ट्रेनिंग कर लो, कितना भी आप डाइट ले लो, शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल है, योर बॉडी विल नॉट प्रिजर्व योर मसल्स, यू विल स्टार्ट टू लूज योर मसल्स अगर बहुत ग्लूकोज लेवल आपका हाई है बॉडी में। तो कीप योर शुगर्स इन रेंज, take a calorie surplus diet, increase, max out your proteins, and exercise, weight training, yes. So that will help, but it will take time, तो इसको time दो, हो जाएगा। Great. I think a lot of people struggle with weight gaining, right? A lot of Yeah, I think with type both 1, yes. ends of the kind of spectrum, right? Like when these discussions happen, some of us are like, like we are trying to lose weight, and then the other half of the people are like, हम लोग weight gain करने की कोशिश कर रहे हैं. So it's a real struggle. Jumping on to the next question, what is Modi and LADA? And for LADA, I would request Nishtha to jump in. So LADA is also called type 1.5 diabetes. Like a lot of people used to call it like onset of, it's a late onset of type 1 diabetes, but it's actually not that. So now they've come up with a term called type 1.5, wherein if you're in your 20s and 30s and diagnosed with type 2 diabetes, your doctor will definitely, or you should request your doctor to do a GAD antibody test and a C-peptide test to see if you have antibodies present and if your body is already shutting down making insulin. It's a very, very slow onset onto type 1. Like, for example, I'm talking about LADA right now, and Rohan is on this panel as type 1, but he started off as LADA as well, and now he's like a proper type 1 diabetic. So, basically, like for me and a lot of other type 1.5s I know, we are on bolus basal carb counting regime also, and we are on metformin because there is some amount of insulin resistance that happens while the production of insulin is being naturally shut down in your body. So that is LADA or type 1.5. And about Modi, I think Nupur can tell you better. Maturity onset diabetes mellitus. It is common in teenagers. Yes. Teenagers. ये थोड़ा टाइप 2 के पास रहती है, राइट? टाइप 2 के ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ रहते हैं, थोड़े से ओबेस या जो कहते हैं बॉडी जिनकी सडन जो कहते हैं ग्रो कर गए और अचानक से वेट गेन किया, तो दे गेट इट इन देयर टीन एंड दे slowly they go to type 2. Basically it is type 2 diabetes but happens to teens. So it is also getting more and more common these days because of this COVID. Modi more seen in younger people, right? और elderly या किसी को भी हो सकता है Modi. Maturity onset, like they are good in they get in teens after 13-14 years. It is in teens. And is it always with a high body fat percentage? Or most of the cases, actually we Indians are more on a thinner frame, right? But nowadays we are getting more food and having more relaxed lifestyle, like more junk food and that thing. So our body, we normal public thinks that if your BMI is less than 25, you will not get diabetes. You are not having any chance to get diabetes. I was diagnosed when my BMI was 23.5, and just I have a twin sister, and we were very small when we were born, and we were very thin built, and just to look like 45, 43 kg, 45 kg till we were in our 20s. Then after marriage and in college, we gained some weight, and it was good because we looked good, because the body was very we are getting better. We are not looking obese, or face is good.
we are shining. We used to eat, and we used to be very happy that we are getting fatter and we have some body to show off. Like, but problem basically is that we can get diabetes when our body mass index is in more than 23, Okay. and waist circumference is more important than uh, Then BMI. BMI. If your BMI is less, if your waist circumference in females, if your waist circumference is more than 35 inches, you measure it and see the most broad part of your waist. If it is more than 35, you can get diabetes or pre-diabetes, and in males it is 40 inches. So इसको if a lot of type 2 are also in our group who have high body fat percentage, right? And how can I quickly get rid of a body fat percentage? अगर किसी को कम करना है अपना बॉडी फैट परसेंटेज तो कैसे करें आप? और आपने भी जैसे प्री डायबिटीज में आपने भी कुछ स्टेप्स लिए होंगे, राइट, टू रिड्यूस योर बॉडी फैट परसेंटेज या बीएमआई कम करने के लिए? as I am telling, I did 25 डाइट. अभी भी मेरे घर में सब हंसते हैं कि तुमने ये हर चीज तौल तौल कर खाने की आदत क्यों डाली है. I started weighing my food, raw food, and eating it. So I was on around my BMR was about 1200 calories, and PD was around, because I cannot do physical activity because I'm in office for 10 hours, and then I have kids. So walking was very difficult. So I started taking baby steps, like walk after meal, each meal. I split my meal into 5 or 6. Some people can do intermittent fasting, but I can, my fasting goes up if I do fasting for long hours. तो मैं नहीं करती. तो नाप कर खाना शुरू किया, डेफिसिट डाइट पर गई, 300 कैलोरीज डेफिसिट में गई, एंड 200 बर्न करने का टारगेट था. 200 आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट 6000 स्टेप्स पर डे एंड सम वेट ट्रेनिंग. वी हैव, अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ ट्रेडमिल. My husband is very supportive. He purchased a small home gym and dumbbell वगैरह. So I do some exercise when I have some time, and I start eating small frequent meals. Just some home workout videos because मुझे इतनी जानकारी नहीं कि किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज करते हैं. There are some apps that show how to do some exercise and you do it with them. तो आप 20 मिनट के लिए आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, कभी ट्रेडमिल में दौड़ लिया, अगर आपके पास चलने की जगह नहीं है, दौड़ने की नहीं है, तो थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर ली. तो बेसिकली एक्टिविटी जो है वो बढ़ाई. डेफिसिट के बाद लगभग 400 ग्राम हर हफ्ते वजन करने के बाद आप 400-500 ग्राम पर वीक आपने, जैसे मैंने लूज किया. तो आई वॉज 61 व्हेन आई स्टार्टेड एंड नाउ आई एम 52. तो 1 साल में मैंने 8-9 किलो वजन घटाया. बट स्टिल आई नीड लो कार्ब डाइट. सम पीपल थिंक आपने वजन घटा लिया तो आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा, बट स्टिल आई स्पाइक इफ आई ईट सम हाई कार्ब फूड. सो आई ट्राई टू बेसिकली अवॉइड इट. आपको अपना वजन कम करना है तो आप अपने खाने को वजन करना शुरू करें. वजन करें, और वो छोटा सा किचन स्केल आपकी बहुत हेल्प करेगा. तो आप एक मिठाई भी खाते तो आप रख कर देख लो. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा या जैसा भी आपको लगे, आप पहले तौल कर देखो. तौल कर खाने से पहले आपका हाथ रुकेगा कि यार ज्यादा हो गया. व्हेन यू मेजर इट, 100 ग्राम चावल इतना ही होता है यार, इससे ज्यादा खा जाते थे. तो धीरे धीरे करके कम करोगे आप. मेजर करने से आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या खा रहे हैं. So you will realize you are eating, an average person is eating around 70 to 80 grams carb per meal, and you have to reduce it to 30 grams carb per meal. पर मील तो I don't काफी know how फर्क पड़ता people, I don't know how people do keto, but मैं कैलकुलेट करती हूँ और मेरा around 150 to 125. Right now I am trying to maintain my weight. तो कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं. तो एप्पल साइडर विनेगर एंड वॉकिंग हेल्प. नुपुर काफी टाइम से लो कार्ब कर रही है, तो बहुत लोगों को ये डर भी रहता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, स्पेशली अगर मैं लो कार्ब करूंगा तो.
Right. Acha, also a quick time check because keeping in mind that everyone has their schedules and everything. अगर किसी को कोई questions है comments में one last question we'll take and Rohan, if we're okay, we can all one closing thought from all of our panelists. And the Closing look up thoughts or into the advice comments. to advice or tips as well. Yeah, that would be good. Yes. So Let's start with I Smita. think Smita, yeah. Uh, for me, first thing is portion control. You can go with our normal Indian diet. I am typically vegetarian, but do concentrate on your left side of plate more than right side. Reduce the intake of chapati and 10,000 steps per day makes wonder. Nice. Must. First. Next. Who's next? Nishtha. वर्कआउट का तो स्मिता जी ने बता दिया इंक्लूडिंग फूड आई एम जस्ट गोइंग टू से लाइक आई एम गोइंग टू रीआइटरेट जो मैंने पहले बोला कि हर किसी का डायबिटीज सेम नहीं होता लाइक यू कैन सी यहाँ पे टाइप्स भी इतने अलग अलग है बट नॉट इवन दो तरह के टाइप 1 या दो तरह के टाइप 2 का बॉडी भी सेम तरह रिएक्ट नहीं करेगा so while you do seek advice from everyone please don't forget to listen to what your own body needs at what time of the day or whether you are unwell whether you're menstruating whether you are just come back from a very heavy workout a very stressful day don't forget to listen to your body and what it needs and keep tracking your sugar constantly so you know what's working for you and what's not working for you and eliminate that lastly we spoke about this but ऐसा नहीं है कि इंडियन खाना खा रहे हैं तो वी कांट practice balanced diet and low carb diet. You can absolutely find substitutes for everything in Indian food, cheap, accessible easily. Just try taking these small baby steps towards eating better, and you will start feeling better already. That's my closing thought. और मैं बोलूँगा कि कनेक्ट विद द कम्युनिटी, मतलब आप लोगों से बात करें, क्योंकि डायबिटीज बहुत हद तक आपको जो डॉक्टर बताते हैं, जैसे डॉक्टर तो आपको बताएगा फिक्स डोज लेनी है, लेकिन जो मैंने सीखा कि कार्ब काउंटिंग और अपनी डोज कैसे वेरी करनी है और बहुत चीजें, तो जो जिसको लिव्ड एक्सपीरियंस है डायबिटीज का, जो डायबिटीज को बहुत सालों से जी चुका है और उसको कॉन्कर कर चुका है, ऐसे लोग आपको ब्लू सर्कल डायबिटीज कम्युनिटी में मिलेंगे। तो आप अपने सवाल पूछने से झिझके मत। हाँ, झिझके बड़े दिनों बाद यूज किए हमने वर्ड। हाँ, तो झिझके मत आप, और बिंदास आप कम्युनिटी के साथ बातचीत करें। ओवर टू एकता। मेरा कहना यही है कि प्रॉब्लम स्टार्ट होने के पहले उसको डिटेक्ट करें, फॉर टाइप 2 ओनली, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट टाइप 1। यू जस्ट हैव द हार्मोन डिफिशियंसी जो आप रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले अगर आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं तो पहले ही आप बचपन से आप खाने की आदतों में सुधार करें। पेरेंट्स आपके हो सकता है वो ना कर पाएंगे, बट इफ व्हेन यू नो दैट यू हैव सम प्रॉब्लम, तो अपनी अगली पीढ़ी को आप बेटर फ्यूचर दें, उनकी ईटिंग हैबिट्स सुधारें, उनकी एक्टिविटी लेवल अच्छी रखें और खुद हेल्प लेने से न डरें। डॉक्टर के पास जाने का मतलब वो दवा नहीं देगा, बट डॉक्टर्स ज्यादातर, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, डॉक्टर्स ज्यादातर मेडिसिन इसलिए देते हैं क्योंकि लोग सुनते नहीं। पीपल एक्सेप्ट करने में उनको 1 साल लग जाता है कि उनको प्रॉब्लम है। अगर तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। स्टार्ट टेकिंग योर सप्लीमेंट्स, स्टार्ट ईटिंग योर लो कार्ब डाइट, पोर्शन कंट्रोल एंड स्टार्ट वर्किंग आउट। आप पहले एक्सरसाइज करिए, डाइट कम करें, ये कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो लाइफ लॉन्ग करनी है, सुधार होने के बाद न एक्सरसाइज बंद होगी, न डाइट कम कमजोर होगी, और अगर दवा ले रहे हैं तो न दवा कम होगी, अनलेस आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब न किया हो कि आप कम करें। लास्ट वर्ड टू नुपुर। आई थिंक सारे पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छे से पूरा सब समराइज कर लिया है। there's just one thing I want to say, one word actually, and that is test. तो आप जो भी करेंगे, जैसे निष्ठा ने पहले कहा था कि बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम डायबिटीज में ये खा सकते हैं। there is no answer for that. You eat it, you test it, and you decide कि आपके लिए वो suitable है या नहीं। तो just test a lot.
So that's it और from me. ब्लड टेस्ट के अलावा आप रेगुलरली अपना विटामिन B12 और डी लेवल भी चेक करें, और HbA1c भी हर 3 महीने बाद चेक करें. Bilkul. Thanks for that reminder, Rohan. Thank you to our panelists for joining in. Really appreciate your time and thank you सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं. We will stay connected every Sunday 5 p.m. We have workshops, we have lives. So we'll see you guys next Sunday and have a And good weekend. give us feedback as well, because we are trying this format for the first time, ये Facebook वाला, and so let us know your comments and how we can improve. Great. All right. Thank you, everyone. हाँ, ये सबके Smita, ऊपर एक लास्ट बात, हाँ, 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 go बताइए. ahead, एक Smita. लास्ट चीज बताना चाहूंगी जरूर. आपका टाइप कौन सा भी हो, सबसे पहले स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीने के लिए शुरुआत कीजिए, तो बाकी की चीजें आराम से आसान हो जाएगी. क्योंकि बाकी की चीजें कुछ भी की जाए, अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आपके सभी लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, आपके एफर्ट्स काम नहीं आएंगे. सही बात बोली एकदम. Wonderful. और स्ट्रेस कम करने के लिए ग्रुप में आ जाइए और अपने थॉट्स और फ्रस्ट्रेशंस और जो भी आपके मन में है वो शेयर करो. और डायबिटीज सपोर्ट नेटवर्क और इंडिया में. इस पे एक और, आई थिंक हमने 2 साल पहले हेल्पलाइन लॉन्च की थी. नुपुर बता सकती है, काफी कॉल्स आई है हमको लोगों का, एंड नुपुर यू कैन एक्सप्लेन. यस, हमारे बड़ी प्रोजेक्ट हेल्पलाइन जो है, मैं कमेंट सेक्शन में ये लाइव के बाद लिंक डाल दूंगी. तो अगर किसी को बात करनी है एक बड़ी के साथ, ट्रेन बड़ी के साथ जो खुद डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, आप ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप के थ्रू हेल्पलाइन यूज कर सकते हैं. एंड विद दैट वी विल सी यू नेक्स्ट संडे. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग. हैप्पी संडे इवनिंग. हैव फन. बाय. Bye.